some people study like that. Other people. कई टाइप के रास्ते होते हैं पढ़ने के लिए. मैं क्या करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ होती है तो मैं अपने दिमाग पे वो बात बिठा देता हूँ. कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो गा के पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो गा के अपने आप को याद कराते हैं. कई प्रकार होते हैं पढ़ने के. Other people like to make study sheets, so they'll write everything on a sheet and then they'll carry the sheet around with them all day. They'll just read it all the time. Other people, I guess, do repetitive writing. So a lot of times, I don't learn things. If I'm reading a book, I can't really learn it unless I write it down and take notes while I read. So that's a way I study. क्या करते हैं, वो एक शीट में सब लिख देते हैं, सारे पॉइंट्स, और फिर आप लिखते रहते हैं. Practice problems for those of you who are going to be doing like economics or chemistry or science stuff or math. A lot of times it's very important to do like a whole practice problem. So you you go to the teacher and ask for extra problems, and you just do practice problems all the time, so you get a feeling of how to do certain problems. You memorize how to do problems. और कुछ सब्जेक्ट में जैसे कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स में ये जरूरी होता है कि प्रैक्टिस करें. So I'll make a study sheet and then I'll write it 4 times. So I'll make one sheet and I'll take the sheet and I'll copy it again and I'll copy it again and I'll copy it again. By the time you copy it 4 or 5 times, मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको एक शीट पे लिख देता हूँ, और एक बार लिखता हूँ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और चौथी बार तक मेरे को सब याद है. So studying is first, and after you study, studying is always a great way to get help with things you don't understand. So I'll talk a little bit about this later, but when you get to school, it's important that you go to support them. You find friends who you can study well with, friends who maybe have a stronger grasp of the material than you do, and kind of work out a relationship so that you can ask them questions. You can always pick up the phone and call your friend and ask a question about like a homework assignment, or you can get together at school and actually study. जब हम लोग पढ़ाई करना शुरू करें तो हमारे लिए ये जरूरी है, जब हम कॉलेज में जाए तो हमें दोस्तों का एक नेटवर्क है जो कि हमारे सब्जेक्ट कर रहे हो, जो कि हमें एडवाइस दे सकते हो, जो कि हमें बता सकते हो, जो कि हमसे ज़्यादा जानते हो या शायद हमसे कम भी जानते हो, ताकि अगर हम ग्रुप में पढ़ रहे हो तो हम अपनी थॉट शेयर कर सकें और हमें कुछ चीज़ समझ. Libraries, whether you can study at home, whether you study better at a friend's home, or whether you study better in a park, whatever it is that you like, make sure you determine that early on, and you know, I don't do good work in the park, so I'm not going to go to the park with my books. I don't do good work, at my friend's house, so I'm not going to go to my friend's house to study. That's very important to decide early on in your education, and then stick to it throughout college. हमारे लिए ये ज़रूरी है शुरुआत में ही जानना कि हम सबसे अच्छी पढ़ाई कहाँ कर सकते हैं. अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एक पार्क में जाके पढ़ाई करना अच्छा लगता है, शांति हो, वैसे ही वही पैटर्न करो. And also, don't study where you fall asleep. ऐसी जगह पढ़ाई नहीं करना जहाँ पे नींद आ जाए. Things to do while studying, do not do these things. So it's very important that when you read, make sure you understand what you're reading before you move on. So if you're looking at a page, no point in reading it because you're going to flip the page and not understand. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए. इसमें पहली चीज़ है कि अगर हम एक पेज पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरा पेज समझ लें और उसके बाद पेज पलट के दूसरी पेज पढ़ लें. ये नहीं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो पलट के उसके बाद की चीज़ नहीं समझ. Also, don't watch TV. टीवी से एक तरफ पढ़ाई करना नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत चीज़ें नहीं कर सकता. अगर हम टीवी देख रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता. ज़रूरी है कि हम टीवी ना देखें और अपने काम करें. These are all just very important not to leave things for the last minute. Don't leave things for the last minute. So if you have a test on Friday, don't wait till Thursday night at midnight to start studying. Make sure you start studying early because a lot of times, most of your stress in college will come from you really waking up. ये ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई बिल्कुल आखिर समय तक ना छोड़ दें. ये नहीं कि सुबह एग्जाम है तो हमने रात के 12 बजे सोचा हुआ है कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो नहीं होगा. Another very important concept is that college is difficult. We may talk about this earlier. It's very important to deal with failure, to learn from your mistakes. So a lot of times you getting into college for them may have been much easier. If their parents have gone to college, they could go to expensive high schools, then getting into college